Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, we'll just wait for 1 minute and then we will start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, let's get started. तो हम लास्ट टाइम जब वी गॉट कट आउट तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन. What was the question? The question was that we are given 3 non-collinear points, okay, and we were to find the center of the circle, right? Now we said there are 3 ways of doing this question. Okay, what are those ways? One is that we can find, give me a second. We can find the 2 chords, okay? We can find their bisectors and we can find their point of intersection. That is one method, okay, which uses finding lines with slopes and their bisector. ठीक है? एक मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम पॉइंट ए बी सी को लें और उनका पॉइंट ओ से डिस्टेंस निकाल लें और उन डिस्टेंसेस को इक्वल कर लें, because all radiuses should be equal. That is the second method. And what is the third method? Third method is the reverse of the second method, which is to put the answers in distance formula with each and see which passes the test result. ठीक है? So let's do by the simplest method first. The simplest method is actually equating the distances, right? So let's say what is OA. ठीक है? Nishant Tiwari, switch on your camera, please. OA हम R है, ये भी R है, R है, तो हम R square लिख लेते हैं anyway, so that we don't have to deal with the root. So what is OA square? इसको XY मान लिया, तो x minus 7 whole square plus x plus y plus 5 whole square, right? उसी तरह से OB square क्या है? x minus 3 whole square plus y plus 7 whole square, and OC square is equal to x minus 3 whole square plus y minus 3 whole square. Right? Right? और ये सबको हम क्या लिख सकते हैं? R square. Now we have 3 variables.
We have three variables, x, y, and r, and three equations, which we can solve. Okay? How will we quickly solve these? Three equations, three variables, squares. Sounds like a little bit difficult. Sachin. कैसे करेंगे solve? What can we do to quickly solve these? Sachin. बताइए. बता. ठीक है तू. Put the values of x and y बढ़िया. from the given options. कहाँ Yes, कर रहा हूँ? that. But अभी तो हमने equations बना ली. हूँ. Who is this? Who is speaking in between? सर आप सबको बेटा बीच में मत ऐसे बोलिए. केवल अगर बात करनी है you talk to me. डिस्टर्ब होता है. यस सर ओके हाँ. तो कैसे देखिए अब ना ये इक्वेशंस को आप स्क्वायर खोल लेंगे ये सब कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. राइट? हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए इक्वेशंस को. तो आप क्या पाएंगे कि ये दोनों, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है. 2 और 3 को देखिए. इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए ये सेम टर्म्स हैं और ये भी सेम है. केवल y वाली टर्म्स जो है वो अलग है. तो लेट्स से वी सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस. Okay, so what will we actually get? We will get y plus 7 whole square is equal to y minus 3 whole square. Right? यस सर इसका क्या मतलब होता है? How will we solve this equation now? Okay, the 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर. Ujjwal, what is happening? What is this nonsense? सर जी उज्ज्वल। किसके बिक्री है? 2 किलो 50 के हैं. Beta, I'll have to remove you people. Whoever speaks all this, I'll remove them from the class. This is my last सर warning. जी जो बोले रिमूव. Mute Okay. yourself, every student. Right? So this is 20y is equal to minus 40 and y is equal to minus 2. Okay. So at this point, we can actually stop. We can go back, put all these values and try to solve. Is it needed? Not needed because only one of the options have y is equal to minus 2. Okay. And we know D is the answer. Sachin. Okay. So despite so many equations, so many variables, we don't have to actually solve all the equations. Okay. अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइए कि यहाँ पे ये ऐसा था. So could I have just removed the squares, taken a square root on both sides and done it like this?
मैंने ये एक्सपेंड करके किया है अभी। क्या मैं दोनों सर साइड अगर हम करके देते तो वो रॉन्ग होता, क्या गलती होती है उसमें? आंसर नहीं आता। हाँ वो तो ठीक है, आंसर नहीं आता, लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए अगर मैं केवल दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो क्या आ जाता है? It actually means 7 is equal to -3, which obviously is wrong, right? तो यस स्क्वायर रूट लेके अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा? क्योंकि कई बार आप एकदम से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की सोच लेते हैं, तो तब क्या करना होता है? I say I don't want to do all these calculations. I want to take a square root on both sides. I am adamant on that. तो कैसे लूं मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट? देखिए तो गलत आ गया। तो मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो उसको लेने का तरीका ये है कि y + 7 इज इक्वल टू +-y-। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब और सर ये 3 कहाँ से आ गया? 3 कौन सा 3? ये तो यहाँ से सर ये आया, जो आप सॉल्व करके। ये तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया उससे आया है। राइट आंसर। अंडरस्टूड? ओके सर, थैंक यू। तो अब अगर हम ये +-3 लेते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी सर, सर क्लास में मेरे नाम से एक और बच्चा भी है। हाँ, ये आई हैव टू रिमूव हिम, राइट? उज्जवल XC35 इज द सर वो तो मैं हूँ और एक और था अभी। हाँ हाँ, वो चला गया अलग। There are some students who do these things, which is very, very bad. Anchal Kasana, mute yourself, Anchal Kasana. You know, this is bad because already we are suffering because of COVID. Students का पढ़ाई का इतना नुकसान डाल, right? उसके ऊपर ऐसा करना तो is totally wrong. Okay, so हम यहाँ प्लस माइनस ले सकते हैं। प्लस लेंगे we don't get the answer, but if we take the minus sign, okay, we will get the answer. Okay, so but just to be on the safer side, you can expand and solve. वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन शॉर्ट आंसर है। Okay, understood? The other way is to directly put the values and check, okay, which will take a lot of time if you don't do it smartly, right? You have to quickly see that, you know, the distance between certain points is clearly very less, right? This point and this point is a very small distance, but this point and this point is a very long distance, right? जैसे आप इन दो पॉइंट्स को लीजिए। सचिन, चाउमीन खाना चल रहा है, आजा। Who was that? I didn't notice. Who said this? Can somebody tell me who said this in the class? That boy said Sachin. मैं ना चुप बैठा हूँ मैं। Sachin is quite late. बेटा दोबारा होगा। I don't want to be policing you people. आप अब बड़े बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे हो, LKG के बच्चे हो। वो कहा पता मेरा नाम ले कह रहा हो कोई, मैंने कहा कही है। Very bad. Okay, so let's move on to the next question. The ratio in which the line segment joining 3, -4 and -5, 6 is divided by the given line. तो हमें रेशियो ढूंढना है।
Okay, so we are given a line segment. And there is a line. Line क्या है? 3x plus 3y minus 1. Okay. तो कैसे निकालेंगे ये पॉइंट? या फिर हमें पॉइंट की जगह ये रेशियो निकालनी है? तो पहले हम रेशियो के रेशियो 1 मान लेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद में जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में पुट कर देंगे. Very good. Okay, so let's first write the coordinates of this point using the section formula. Okay, तो क्या होगा? -5k plus 3. Let me write it. -5k plus 3 by k plus 1. y plus 1. And 6k minus 4 by k plus 1. Right? Now this we have to put in this equation. Okay, so I'll just rewrite this equation slightly differently. Is equal to 1 by 3, so that my calculations are easier. Right? Now I'll put the value of x and y here. So I will get -5k plus. सर हाँ बोलिए. सर किसी का माइक खुला है सर, आवाज आ रही है. हाँ निशांत तिवारी है. निशांत तिवारी. मैम मैं बता रहा हूँ मैम. हाँ मैं बता रहा हूँ किसी की आवाज आ रही है. ओके. हाँ ओके. ओके निशांत, नाउ इट्स ओके. ठीक है. So this is k minus 1 by k plus 1 is equal to 1 by 3. Okay, so 3k minus 3 is equal to k plus 1. 2k is equal to 4 and k is equal to 2. Okay, so what ratio does this line divide? K is to 1, yani 2 is to 1. So the answer is 2 is to 1. Okay, ये standard question है, बहुत ही standard question. You should know it on your fingertips how to solve such a question. If the coordinates of two opposite vertices of a square are AB and BA, then the area of the square is. What is the area of this square? How will we do this? So first we can find the distance between these points, and then by using the Pythagoras theorem we can find the side of the square. Yes, right. So we can find this distance. Okay, distance by √2 will be the side, right? So what is this distance? This is a minus b whole square plus b minus a whole square. Okay, which is 2 in under root, right? So which is 2a minus b whole square, right? क्योंकि b minus a हो, a minus b हो, कोई फर्क नहीं है within the square. You understand why I can make this, right? So which is a minus b, okay, the positive value of this into √2. Okay, now what is the area? So first let's see what is the side. Side is this by √2. So a minus b is the side.
Okay, area is a minus b modulus का whole square. This is area, which is same as a minus b whole square या फिर b minus a whole square. एक ही बात है, right? It will be, the answer will always be a positive number. So कैसे भी हम लिख सकते हैं. It is a multiple choice question. Then a minus b whole square, b minus a whole square, both are the same, right? If the points, the three given points are collinear, then the value of a will be. Okay, we did a similar question yesterday, I mean day before yesterday when we had the last class. A very similar question we did. Okay, and we said there are two methods we have. The third method we don't have. What are the two methods? Area of triangle. हाँ, तो वो क्या है दो? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास मेथड अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है. तो दो मेथड्स अवेलेबल हैं. कौन से? That is AB is equal to B. AB plus BC is equal to CA. हाँ, तो एक है डिस्टेंस फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना, और एक कौन सा मेथड है? सेक्शन फॉर्मूला मेथड. सर आवाज ना आ रही. बेटा और लोगों को शायद आ रही है. यू इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑन योर फोन. ओके, तो ये दोनों मेथड है, ठीक है. और ये दोनों जो मेथड्स हैं हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए. Sequence need not be known. And hit a bump. ठीक है. That's why we want you to sit down side. तो वो बोलता है कंडक्टर कि हम लोग चाहते हैं कि तुम आराम से बैठो. क्यों? अगर बस में कोई शार्प टर्न लिया तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट वोट लग सकती है. I am not a child. I'll tell you. विक्रांत He said irritably, I am 8 years old. बोलती मैं कोई बच्ची, मैं 8 साल की हूँ. विक्रांत, ठीक है. विक्रांत बेटा आप क्या कर रहे हो? आप वीडियोस देख रहे हैं पढ़ाई के बीच में या क्या कर रहे हैं? सर दीदी पढ़ाई कर रही हैं. अच्छा ठीक है, तो म्यूट पे रखिए, जब बोलना है तभी अनम्यूट करिए. ओके सर. ओके, सो सीक्वेंस शुड बी नोन एंड सीक्वेंस नीड नॉट बी नोन. तो सेक्शन फॉर्मूला ज्यादा वर्सेटाइल है. अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से पहला ये है कि क्या आप इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? इज द सीक्वेंस नोन इन दिस फॉर्म, इन दिस क्वेश्चन? हमें पता है सीक्वेंस पॉइंट्स की? No, sir. सी ए इज अननोन बट एब्सिसा तीनों के नोन है, राइट? सो इसका एब्सिसा -2 है, इसका 2 है, इसका 8 है. तो सीक्वेंस तो यही होगी. या तो ऑर्डिनेट पता हो सारे या सारे एब्सिसा पता हो, सीक्वेंस तो पता चली जाती है ना, राइट? तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया. तो इस गुड न्यूज क्या है हमारे लिए? इसमें हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि चाहे हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लें, चाहे हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से कर लें. ओके सर दोनों का आंसर सेम ही आएगा फिर? आंसर तो सेम ही आएगा, दोनों मेथड है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, ठीक है ना. तो लेट्स डू इट बाय द वर्सेटाइल मेथड. ओके,
ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला ज्यादा वर्सेटाइल है, उसी को यूज करके करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड द, हाउ विल वी डू दैट, वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स एज्यूम इट डिवाइड्स इट इन द रेशियो k:1। सो बी के क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, 8k - 2 by k+1 और ak -5 by k, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट कर लेंगे। तो 8k -2 by k+1 is equal to 2 and ak -5 by k+1 is equal to -2, right? ठीक है, अब क्या करेंगे, ak -5 by k+1 is equal to 2 वाले इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो what we can do is use the substitution method, maybe that would be the easiest, I suppose. So 8k - 2 is equal to 2k + 2, right? So 6k is equal to 4 and k is equal to 2/3, right? अब उसको वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। So 2a/3 - 5 by 5/3 2/3 + 1 -10/3 is equal to 2a/3 is equal to 5. Okay, a is equal to 5. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली आप इस इक्वेशन को डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स and you can then find the distance between these 2 points and equate the sum of those to distance between these. Okay, but you will have to deal with the squares there. That's the square and square root. वो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ बोलिए। लेकिन जो आपने -10/3 लिखा है, ये तो 6/5 आना चाहिए ना। कहाँ पे सर, ये ऊपर जो आपने लिखा है, जैसे 5/3 है, 2a/3 5/5 ये ऊपर है इसी लाइन में। ये यहाँ पे गलती की है। यस सर, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर जाएगा ना, 2 × 3/5 हो जाएगा। नहीं, ये 15 - 10/3 हो गया, 5/3 हो गया, यहाँ तक ठीक है सर। यहाँ नहीं, आप ये ऊपर जो इक्वेशन बना रखी है, 2a/3 - 5/5/3 is equal to -2, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 5/3 है, अगर ये इज इक्वल टू के इधर पे जाएगा तो 3/5 हो जाएगा ना। अच्छा, ये वाली बोल रहे हो आप। हाँ, तो ये ऊपर गया ऐसे, तो -10/3 हुआ ना। देखिए पूरा जाएगा ना ऊपर। प्रियांशी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, राइट? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये 5/3 एज अ होल मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना, क्योंकि सी विच इज द लॉन्गर बार, दिस इज द लॉन्गर बार, तो ग्राउंड लेवल तो ये है। यस सर, आ गया, मैं कुछ कंफ्यूजन हो गई है ना। तो इंपॉर्टेंट देखिए, फ्रैक्शंस में याद रखिए, लेंथ ऑफ द बार इज इंपॉर्टेंट।
राइट। जैसे ये है, मान लीजिए ये एक अलग फ्रैक्शन है वर्सेस। सर आ गया, हमें कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, है अब ना? सॉर्ट आउट हो गई। हाँ ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ बार से मीनिंग बदल जाता है। Okay. If the coordinates of any of if the coordinates of the center of a circle are 3, 4 and the coordinates of one end of its diameter are 5, 3, then coordinates of the other end of the diameter are. ओके बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, राइट। हमारे पास सेंटर है 3, 4, हमें एक दूसरा पॉइंट दिया गया है 5, 3, हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। सर x, y मान लेंगे और 5 + x/2 = 3 and 3 + y/2 = 4। I didn't understand. आपने क्या कहा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, is it? Yes sir. हाँ 5 ओके + x/2 हाँ वेरी = 3। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और सेक्शन फॉर्मूला विच इज सेम एज मिड पॉइंट, यू नो जेनरिक फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 1:1 रेशियो है, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। 5 + x/2 = 3 and 3 + y/2 = 4। is equal to 4, right? So we will get x is equal to 1 and y is equal to 5. Okay, so it is 1, 5. The point is 1, 5. Okay, very, very simple question. This was an easy question. Point P divides the line joining the points A and B such that AP by AB, okay, is 1/3. If P lies on a given line, then find the value of K. सर इसमें रेशियो हो जाएगा 1:2। Right, so we are given AP is 1 and AB is 3. So रेशियो हो जाएगा 1:2। 1:2. ओके, तो A गिवन है, B गिवन है, so we can find the coordinates of P now, and then those coordinates we will go and put in the given equation. ठीक है, तो P के coordinates लिख लेते हैं। 4 + 5 by 3 and 2 - 8 by, which is 3. 9/3 is 3 and -6 -2, right? So this is P. Let's just go and put it here. So 2 × 6 - 2 + K is equal to 0. So K is equal to -. Okay, this is the answer. So this is a typical question. Most of the questions are framed like this.
In the following figure, what is the equation of the given line? Sir, C option. Yeah, that should be the option, right? तो कैसे करेंगे हम? Okay, y is equal to mx plus c पता है सबको, right? Yes, sir. What is the slope of this line? 3 एक by बार दोबारा सब लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to mx plus c होती है ना? m is slope and c is y-intercept, right? Okay, so slope क्या है? 3 by 3, 1 है slope. So y is equal to x और 3 कहाँ पे y एक्सिस कट हो रहा है? 3 पे. So ये इक्वेशन है लाइन की जो c है, which is c. So c is the answer. Okay. Any other way to do it? What could be the other ways to do this question? What could be the other ways to do this question? सर सिंपली वैल्यूज पुट करके देख लेंगे इक्वेशंस में. कौन सी वैल्यूज? सर लाइक 0,3, सो x की जगह 0 एंड y की जगह 3 जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. हाँ, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख सकते हैं, 0,3 एंड -3,0 एक एक करके इक्वेशंस, राइट? That is another. Yes, sir. It might take slightly longer because this is a very simple line to find the equation of, but that is definitely another method. If you have forgotten कि equation कैसे बनाते हैं, तो भूल भी गए तो question तो कर ही सकते हैं. Okay, so we are now coming to the end of the class, so I'll not move on to the next question. Anyway, I was left with only one more question in this exercise. Okay, I'll still leave the question with you. Which point on x-axis is equidistant from 7,6 and -3,4? कैसे करेंगे? सर एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो वाई एक्सिस पे 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0. अब सर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट? यस सर. Distance from this and this should be the same. Okay, we can't do it. We are left with only a few seconds. Okay, but ये आप खुद कर सकते हैं, ये easy question है. With this we complete the revision of this chapter. Okay, I'll move on to the next, which is trigonometry, I suppose, right? So in the next math class, and tomorrow we will do science revision. Magnetic effects of the current. Okay, so join the class for sure, and we will revise that chapter tomorrow. Okay? Okay. Thank you, students. Bye-bye. Sir, Arshita and Anmol join late. Okay, okay. Okay, sir. Huh, sure.
थैंक यू मैम। both the two student. Okay, okay. ओके बेटा, टाइम से ज्वाइन करिए, अटेंडेंस तभी मिलेगी आपको। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।